Hello. Continue with the unit that the solid state three-dimensional closed packing. Yesterday we looked into the square planar and the hexagonal closed packing. Now in a square planar I have drawn here one plane. Now cube has number of planes. So if this is a one plane and it's called as the A and the A in a square plane. But now this is a whole plane, two-dimensional arrangement is labeled as A. जैसे अंडों का क्रेट देखा होगा आपने, जिसमें कि अंडे रखे जाते हैं, लेकिन जब खाली होते हो तो एक एक ऊपर एक रखता है. सो ऐसे क्यूब दिखाई देता है, लेकिन हम उल्टा अगर रखे उसको तो ऐसे थ्री डायमेंशन में तो आ जाएगा ना. वैसे ही सेम टाइप ऑफ प्लेन इज प्लेस्ड. दैट मीन्स द बॉल इज प्लेस्ड ओवर द बॉल. The ball is placed over the ball. The whole plane is placed as this layer is A. So it will crop up A type, which will give rise to the simple cubic unit. What is the primitive unit? Okay, it generates simple cubic. Okay, and coordination number in this is 6. How that coordination number is? Now the three-dimensional square closed packing look like this. See, this is a square pack closed packing. Here you will observe. The one cube is drawn here. Watch carefully. So A type, the two-dimensional square plane is repeated again and again. As the first layer, you will get the simple cubic unit. Okay, just remember, if we put the second row here, what happens? Think upon over that. All right. Now for the simple cubic unit, see, coordination number is what? Now, see, this is a first unit cell, first cube. Alright. Now, above this, either consider this the top of the first cube. Here, this is cube. You will consider this point at the cube corner of the cube. Then it's a bottom side. All right. Now इस क्यूब के फ्रंट साइड का ले लीजिए, तो ये बैक साइड का, और ये अगला जो क्यूब होगा उसके फ्रंट साइड का इसमें आ जाएगा. ऑल राइट. वैसे ही ये जो गिवन क्यूब है इसका एक पॉइंट, और इसके राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड में जो क्यूब होगा उसका एक पॉइंट. मतलब एक प्लेन में ये 4 पॉइंट्स इस कॉर्नर पॉइंट के साथ अटैच होंगे. 1 पॉइंट इज अबाउ एंड 1 पॉइंट इज बिलो. सो कोऑर्डिनेशन फॉर दिस इज 6. प्लीज रिमेंबर, इन योर न्यू बुक द वेरी क्लियर डायग्राम इज गिवन. सो सिंपल क्यूबिक में मैंने एक आपको बता दिया है कि आप ये सोचिएगा, अगर हम इसका लेयर ए क्रॉप अप ना करते, ए बी अगर करे तो क्या होगा. ओके, दिस इज योर होमवर्क. नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड, दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग in a two dimension, and now these are the A layers,
This is the A layer. Now when the hexagonal close packing in 2 dimension is there, in this plane there are 2 type of whites. Yesterday I explained this. A type and B type. One is the vertex is in upward direction and one is the downward direction. Now the second row we can put here. Suppose we put this point here, the first, the occupying the second layer, the sphere is placed over the A void, which is triangular. It is in upward direction. See, now this is A. So we will occupy this also. Alright, this is also A. So just look at when we place the second is this over the A. Okay? So what happened here? This void A in the first layer is closed by the void of the second layer. Therefore, it gives rise to the tetrahedral void. Now, remember when we put the second layer here, what happens? There are again 2 types of voids are formed. Please see very carefully here. This is again the void which is, जैसे ये B था फर्स्ट लेयर में, वैसे ही ये फॉर्म हो गया और इसको हम कहेंगे अब C. सो जब सेकंड लेयर हमने रखा तो वहां 2 प्रकार की वाइड फॉर्म हो चुकी है. ये मैंने कल बताते बताते मैं रुक गया था. दैट इज नाउ द फर्स्ट वाइड इज अगेन ट्रायंगुलर एंड दैट इज द C वाइड. बट हियर जो लोअर लेयर था उसके ऊपर जब हम एक वाइड पे बॉल रखते चले जा रहे थे तो यहां पे ये जो बी वाइड थी इस पार्शियली ऑक्युपाई हो गई थी. मतलब यहां पे एक ऐसे वाइड फॉर्म हो गई थी जो कि इस तरह से थी. सो दिस प्लेस इज वाइड अगेन फॉर्म. सो व्हाट हैपेंस देयर? just look at this. This is one sphere in the lower layer. This is the second in a lower layer and it is third in a lower layer. Upon this is small a, small b and small c. These are the 3 layers overlaps with each other and that voids are overlapping and then it will give you the octahedral void. Okay? Now with this A and now this layer is B. Now suppose there are 2 ways now again. Either to put the third layer over this C, again tetrahedral void, or we can put here the void which is B where the octahedral void is formed. Here the octahedral void is formed. And suppose now we put the third layer, but it is now difficult to understand this. Suppose this is the C void, this is the C void, this is the C void in the second layer, this is the octahedral void in the second layer. Now above C, if we will put the third layer, it will just like the layer A. So when we put AB, 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 what happens? What happens here? Think. Now there are these are the 6 spheres in the lower layer. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is 1, 2,
3, 4, 5 and 6. एंड अपॉन दैट यहां पे जो 3 व्हाइट्स थी यहां की, सो ऐसे 3 स्फीयर्स ये सेकंड लेयर में आ चुके हैं. ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी. क्लियर? उसके बाद फिर अगर हम ये सेकंड लेयर में सी व्हाइट जो फॉर्म हो चुकी है, जो ट्रायंगुलर है, जो फर्दर ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट होने वाली है, तो ये थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर, ये एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है. इसलिए इसके ऊपर अब और एक हेक्सागन आएगा. एक स्फीयर ऐसे आएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये आपको देगा हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ये 6 बॉल हो गए, ये 3 बॉल हो गए, और इसके नीचे फिर एक हेक्सागोनल इस तरह की अरेंजमेंट आएगी. इफ यू जॉइन दिस, draw it carefully and join the points, you will get the hexagon. All right, you will get the hexagon. All right, and one point is here. This is the central one here. All right, so hexagonal close packing you will get here. All right, the second type of overlapping, that will be now A B C. मतलब अब थर्ड जो पॉइंट है हम रखेंगे, देखिएगा ये हो गया A और B हमने रख लिया. अब दूसरा रास्ता ये था कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां फॉर्म हो गई है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब हम क्लोज करेंगे थर्ड लेयर में, तो क्या होगा, this third layer, the spheres of the third layer never match with, not coincide with, not overlap with the layer A or the layer B, or okay. So this will give you the another type of arrangement, and that arrangement will result that the AB अगर होगा तो आपको HCP मिलेगा. ABC जब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगी, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगी, इसमें सेकंड लेयर में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होगी, तब इससे मिलेगा CCP, और यू कॉल्ड एज द FCP, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ऑल राइट, इफ दिस इज द मैटर, देन नाउ द रिलेशन बिटवीन the number of atoms present in a cell, unit cell, and the formation of different types of voids just be stated here. Octahedral void and the tetrahedral void and their sizes. Just if you go through the notes, there are the figures in your state board's book 1.4, 1.5 to 1.8. In the next video, we will discuss the formation of octahedral void, how many octahedral voids are formed in CCP, and how many tetrahedral voids are formed. It depends upon the number of atoms present per unit cell. So, if you have any queries, call me or ask the questions. See you in the next video.